Do we have a mic? Good afternoon, everyone. Hi, this is Dr. Poornima Mathur, fertility consultant at Oasis Fertility Center, Vadodara. आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करें जो सबको इतना ज्यादा we talk about it so often, obesity and infertility. What is obesity? Obesity में हमारे ऊपर क्या असर होता है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है एंड हमारी प्रेगनेंसी आउटकम्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. So let's start about it. Is my screen visible? Yeah. So we are going to talk about कि obesity क्या है. Why are we talking so much about obesity these days? उसकी prevalence क्या है, वो इतनी rise पे क्यों है? And how does it affect fertility? Males में, females में. क्या males are immune to obesity? उनकी fertility पे कोई फर्क नहीं पड़ता या फर्क पड़ता है? And हमारे पास treatment options क्या available हैं? And जो most talked about topic, bariatric surgery. कब करवानी चाहिए, किसे करवानी चाहिए, what are the advantages of getting the surgery done, and उसके बाद की fertility पे क्या इफेक्ट है. तो let's start. Overweight and obesity अगर हम देखें तो बॉडी में excessive fat accumulation जो है that is known as being overweight and obesity. उससे हमारी हेल्थ को रिस्क होता है. रिसेंटली ओबेसिटी एक एपिडेमिक की तरह हो गया. अगर हम देखें तो ICMR, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो the prevalence rate of obesity has increased from 11% to 31%. और अगर हम सिर्फ सेंट्रल ओबेसिटी की बात करें, जो हमारे पेट के ऊपर जो मोटापा आता है, तो that has risen from 16% to 36% respectively. So हम ओबेसिटी मेजर कैसे करते हैं? How do we know कि कोई ओबीज है कि नहीं है? So we have an index, the body mass index. आपने बहुत सुना होगा, we talk about BMI. Now what is BMI? BMI हम एक किसी पर्सन के वेट और हाइट से कैलकुलेट करते हैं. उसका एक फॉर्मूला होता है. That is used as a marker for the nutritional status, कि एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. And that BMI उसको हम यूज करते हैं to classify what is the person obese, overweight or a normal weight. So BMI is calculated by weight divided by height in meter. And the BMI index जो है, it varies from 18.5 to more than 40. So what is normal BMI? अगर हमारा BMI है 18.5 to 25 के बीच में, तो you have a normal BMI. But 25 to 30 is overweight, 30 to 40 is obese, and more than 40 is morbid obesity. So obesity के risk factors क्या है? कोई इंडिविजुअल सोचे कि भाई am I at risk for obesity? मेरी फैमिली में obesity है. तो वी हैव नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कि हमारी एपिजेनेटिक फैक्टर्स है, पॉलीजेनेटिक हमारी हेरिडिटरी है. एज के साथ हमारी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है. हमारा अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर है, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स हमारी न्यूट्रिशनल हैबिट्स, दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी. Psychological factors, if you are under depression, psychological stress, that can lead to obesity. And certain medicines जैसे tricyclic antidepressants and कुछ other medicines हैं which can lead to weight gain. So अगर हम overall देखें तो it is basically a balance between the food intake and हमारी physical activity. Obesity ऐसा नहीं है कि भाई if it is there in my family it cannot be prevented. Obesity is preventable. The various causes हमें पता है. It can be overeating, कि हमारा food intake ज़्यादा है due to lack of knowledge, peer pressure है, emotional stress है, medicines है, lack of sleep है, या हमारा energy expenditure कम हो रहा है due to age, female sex is more predisposed, genetics and epigenetics जो हमारे brown fat के predisposition को affect करते हैं, and other medicines, या हमारी physical activity कम है. Physical activity कम होना can be one due to हमारे sedentary lifestyle which is voluntarily chosen, or it may be due to some other medical conditions जो हमारी physical activity को limit कर रहे हैं. Chronic fatigue है, muscle pains है, joint pains है, या certain medicines है. So obesity के effect क्या आते हैं? तो अगर हम देखें तो एक obese woman जो है, she is three times more likely to be infertile than a normal woman. Or if in case the lady decides to go for weight loss, तो हमारी जो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है, हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते जाते हैं विद वेट लॉस.
क्योंकि एवरी बीएमआई जो 29 को एक्सीड करता है वो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करता जाता है बाय 5%. नाउ व्हाट आर द कॉजेज हमारी ओबेसिटी कैसे हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है. तो वी हैव डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारे फैट टिश्यूज में रिलीज होते हैं विच हैव एन इफेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर. और डिफरेंट हार्मोनल पाथवेज है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लेप्टिन इंक्रीज हो जाते हैं, वेरियस मार्कर्स रिलीज होते हैं जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं इन दी बॉडी, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. दीज ऑल फैक्टर्स जो है अगर हम देखें दे कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. उसमें हमारे जो फॉलिकल्स हैं, जो हमारे बीज बनते हैं, उनका एट्रीजिया हो जाता है, अली अच्छे से एग बन नहीं पाता है, एंडोमेट्रियम जो है बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर है उसकी रिसेप्टिविटी कम हो जाती है. हमारे जो हार्मोन्स हैं जिनके स्टिमुलस की वजह से या जिनके मैकेनिज्म की वजह से एग बनता है, उन हार्मोन्स के ऊपर फर्क पड़ता है. हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं उनका लेवल्स ऑल्टर हो जाते हैं बिकॉज ओबेसिटी के साथ हमारे एडिपोज टिश्यू में डिफरेंट हार्मोन्स के मेटाब होता है जिसकी वजह से हार्मोन लेवल्स ऑल्टर हो सकते हैं. एंड ये सब फैक्टर्स देन लीड टू इनफर्टिलिटी. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ओबेसिटी एंड पीसीओएस? इतना हम बात करते हैं कि पीसीओएस इतना प्रेवलेंट है. Many young women, PCOS is another epidemic जो हमारी young girls are actually facing. Is there a connection? So yes, it is. Obesity में PCOS हो सकता है. Now, when a girl is obese, तो उसकी hypothalamo-pituitary ovarian axis जो होती है, हमारा जो central nervous system का जो messenger system है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, which can lead to PCOS. इंसुलिन का हमने सुना है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है ओबेसिटी में, which can lead to insulin के levels बढ़ना, and this hyperinsulinemia plays a role in PCOS. इंसुलिन जो है वो ओवरीज में एंड्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, गोनाडोट्रोपिन के सिक्रीशंस को अफेक्ट करता है. तो इन शॉर्ट ओबेसिटी जो है दैट इज प्रीडिस्पोजिंग अ यंग गर्ल और अ लेडी टू हैव PCOS by various hormonal changes. Can PCOS patients have obesity? तो women जो have who are predisposed to PCOS उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपरएंड्रोजेनिज्म होता है which can in turn lead to weight gain and eventually obesity. तो obesity and PCOS का एक vicious cycle सा है. If you are obese, you can have PCOS and उसके हिसाब से जो हमारे hormonal changes होंगे which can in turn lead to more weight gain. So we need to break that chain. So how do we break that? हम treatment plan क्या हो सकता है? First and foremost, सबसे important है lifestyle changes and nutritional changes. We need to focus on healthy diet. आजकल we have a stressful life, everybody is busy, and that is why हम अपनी diet पे focus नहीं कर पाते हैं. In turn, we tend to eat diet which gives us immediate stress relief लेते हैं, जैसे high sugar content होता है, high carb content होता है, high glycemic index होता है. ये सब जो है they predispose us to obesity. So we need to first and foremost make a change in our diet plan, adopt healthy eating habits. Next is exercise. Exercise is very important. With exercise आपकी insulin resistance कम होती है which in turn breaks that chain of obesity, PCOS, infertility and a lot of hormonal variations that are there in your body. Psychological counseling. Obesity जो है that leads to when a person is obese, the patient tends to, because of the high pressure, social media pressure that we have around, everybody wants a size 0, and dealing with obesity is not easy. I totally understand, it's not at all easy. हर कोई आपको कहेगा कि weight loss करना है, ये करना है, but it's not that easy. It's like you are trying, but at the same time the lady tends to feel a little depressed or stressed, जिसकी वजह से हमारा जो है eating habits change हो जाती है, which in turn predisposes more to weight gain. So the patients also need a psychological counselor to help them overcome the depression issues if in case they have any. Particularly to infertility is we can go for IUI, intrauterine insemination, IVF and ICSI. The pharmacological interventions, though they are available in the market, not routinely recommended, appetite suppressants and weight loss, because they have their own baggage of side effects like depression and all. And then we have the surgical intervention, the bariatric surgery. So how do we proceed? What is a healthy weight loss? So these days people go through YouTube, Insta पे देखी, किसी ने बोला ये diet plan अच्छा है, randomly we adopt that,
without keeping in mind ki how am I able to take care of my body's nutritional status? Am I able to provide it its necessary essential nutrients? So the healthy weight loss is not कि भाई मैंने 1 week में 10 kgs lose कर लिया, I've starved myself, and next week मैं start eating and gain it again. The healthy weight loss is slow and steady, which is sustainable as well. Go start with losing 1 kg per week. Have patience and be perseverant. So, losing weight is going to increase your chances of pregnancy, improve your lifestyle, and any associated जो comorbidities है, they can be taken care of when you lose weight. So, how do we lose weight? There are different types of diets available in the market. Keto diet है, DASH diet है, intermittent fasting है, Mediterranean diet. But what is best for you? You have to adopt a diet after consulting a nutritionist only. Because many a times हमने देखा है young girls वो online देखते हैं and then they are like B12 deficient है, folic acid deficient है, anemic है, they're not able to take care of their own body's nutritional requirements. So I would recommend कि whenever you have to go for a weight loss diet plan, please consult a professional nutritionist. We have an in-house nutritionist जो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान एज पर योर रीजन योर डाइट हैबिट्स आपको बना के दे सकते हैं which you can follow and which can help you lose weight. Exercises are the best, like they help you in improving your insulin resistance, help you with the weight loss. Type of exercise क्या आपको करनी है, that should be also personalized. Jogging feasible for one person might not be the best option एक other person के लिए. Some person might be comfortable doing yoga, the other person might be able to do extensive pilates. So whatever works out best for you, but you need to have 1 hour of active exercise at least 5 times a week. And I would see I would like to lay emphasis on this. Young girls जिनमें आजकल PCOS इतना common है, as parents or as caregivers हमें emphasize करना चाहिए that it is not, exercise is not feasible for young girls. Maybe आप बोलोगे स्कूल में है, 17-18 कॉलेज में है, go ahead do exercises. Instead we should give them a more sustainable option. They should adopt a sports activity, for instance maybe badminton, tennis, athletics, swimming. That would help them control their weight, help them adopt a better lifestyle. Now we'll talk about something called bariatric surgery. Now what is bariatric surgery? How, when is it indicated, and does it affect my fertility or pregnancy? Can I get pregnant after that? We have a myriad of questions in our mind when it comes to bariatric surgery. So bariatric surgery जो है, we prefer it for morbidly obese patient जिनका BMI more than 40 है, या फिर जिनका BMI more than 35 है पर उनको comorbidities हैं साथ में, जैसे उनके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत कुछ है, वो उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है. So that is when we advise bariatric surgery. So what happens in bariatric surgery? Different types of वो होती हैं. There's sleeve gastrectomy, gastric bypass, gastric banding या biliopancreatic diversion. The most commonly जो हम young लोगों में होती है, that is sleeve gastrectomy. The natural path of food is maintained. Dumping syndrome नहीं होता है. This is the preferred one for young people. So is it safe? तो with आज के modern era में, in good hands, bariatric surgery is very safe. As it is as safe as any other general surgery procedure like cholecystectomy, जो आपने सुना होगा बहुत routinely लोग होता है. Now how does it help you? Bariatric surgery आपकी जो comorbidities हैं उनको control करने में help करता है. बहुत studies हुई हैं. After bariatric surgery, लोगों की sugar controls, glycemic controls have improved drastically. High blood pressures have come down. Lipid profile has improved. Fertility restore होती है, and it improves the mental health as well. So, is it that important? मतलब I am going to get pregnant and मेरा इतना high BMI है, should I be worried about it कि मैं surgery या medication या किसी चीज के लिए वो करूँ? तो high BMI या obesity, morbid obesity की अपने risk factors हैं, both in the pregnancy and to the baby as well. Pregnancy, even if पहले तो we have the infertility issue. If in case you conceive, तो there are higher chances abortion होने के, stillbirth होने के, pregnancy associated complications like gestational diabetes या high blood pressure, heart problems, increased operative interference, इन सब के chances बढ़ जाते हैं.
मोreover बेबी में भी हमारे इफेक्ट्स आते हैं कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या बेबी का बर्थ वेट जो है वो ज्यादा हो सकता है, उसमें ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Baby is at a higher risk for childhood obesity and childhood asthma and developmental delay. So we know that high BMI is not going to help us out and we have to sort it out. If lifestyle modification can help, it's good. If we are morbidly obese, we can opt for the surgery. But can I easily get pregnant after weight loss surgery? मतलब मेरे को कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? वेट लॉस सर्जरी जो है मॉर्बिड ओबेसिटी में, इट इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस ओबेसिटी. वो आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है. विथ प्रॉपर केयर हमारे मोस्ट वुमेन जो हैं दे गेट प्रेग्नेंट एंड हैव हेल्दी बेबीज. सो व्हाट शुड बी टेक केयर ऑफ? सो वी शुड टेक केयर कि हमारी प्रेगनेंसी जो है शुड आइडियली बी डन जब आपका पोस्ट सर्जरी वेट लॉस स्टेबलाइज हो जाए. When you plan to get pregnant, you need to check your levels of iron, B12, fat soluble vitamins कि वो कैसे हैं, and any deficiency should be corrected. Routine assessment of vitamin A, E and K should be monitored. Now इतना हमने डिस्कस किया. Is obesity only affecting females? Males को कुछ नहीं होता. Can they eat their junk as per their discretion? No. Males are 2 times, like obese males are 2 times higher risk for मेल इनफर्टिलिटी. बहुत स्टडीज हुई, दे ऑब्जर्व्ड कि मेल के जो सीमन पैरामीटर्स हैं उसमें फर्क पड़ता है, स्पर्म के फंक्शन अफेक्ट होते हैं, द काउंट ऑफ द स्पर्म, नंबर ऑफ स्पर्म्स रिड्यूस हो जाते हैं, एंड व्हाट इज द जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है दैट अफेक्ट्स हमारे डीएनए इंटीग्रिटी को, एंड काफी सारे फैक्टर्स हैं व्हिच लीड टू अफेक्ट ऑन द सीमन पैरामीटर्स व्हिच विल लीड टू मेल इनफर्टिलिटी. प्लस उसके साथ ड्यू टू ओबेसिटी देयर आर फिजिकल डिसऑर्डर्स एज वेल, जिससे हमें सेक्सुअल एक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्पर्म पैरामीटर्स पे. नाउ मेल्स के लिए क्या है? the mode of treatment remains the same. We have the lifestyle and the nutritional changes जिसमें diet and exercise करनी है. Pharmacological होते हैं appetite suppressants या aromatase inhibitor, weight loss drugs. And then we have bariatric surgery, scrotal lipectomy, जो हमारे टेस्टिस जहाँ अराउंड स्क्रोटम में प्लेस्ड होते हैं, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है तो दैट लीड्स टू rise in the temperature around the testis, which is not desired, which is going to affect the semen parameters. So scrotal lipectomy is an option. या फिर you can get the assisted reproductive techniques like IUI, IVF and ICSI. So अगर हम देखें तो what are the take home messages? Obesity is going to affect both males and females. Weight loss should not be random without proper guidance. It should be done in a healthy way. Take proper guidance from a nutritionist so that you can change your diet. Adopt a healthy exercise plan and by a proper, like somebody who can guide you, a trainer which suits you best. Diet, exercise, surgery and counseling helps. But if in case you are struggling with obesity and infertility, we are always happy to help. You can come to us. We can plan your pregnancy. We can plan your weight loss schedule and we can help you achieve your goal. We would be more than happy to help at Oasis. Thank you so much. Any questions? Any questions? Okay. In that case, if in case you have any query, you can drop in a message at Oasis Fertility, Vadodara. We have a nutritionist who can guide you with your weight loss, and we can help you guide you through your fertility journey. Thank you.